रहा है कि उसका उद्देश्य क्या है। और थर्ड है संक्षिप्त एवं स्पष्टता। सरल बहुत इजी लैंग्वेज में होना चाहिए कि क्लियर समझ आए बच्चों को। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जटिल भाषा का आप उपयोग करें कि जो समझ ही नहीं आया। और फोर्थ है दृश्य कहानी कहना। मतलब दृश्य कहानी अगर आप इमेजेस के थ्रू कहोगे तो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा सेंस ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होंगे। और फिफ्थ है आकर्षक संरचना। कहानी की शुरुआत और मध्य और अंत किस चीज से हो रहा है तो वो पहले से अगर हमें पता होगा तो हम ज्यादा प्रभावशाली लोगों के लिए बना पाएंगे उसे। ओके तो साईं आप उनको गाइडलाइन बता दीजिए वीडियो स्क्रिप्टिंग की, वो भी बहुत जरूरी है हमारे व्यूवर्स को। यस संध्या, सो since Sandhya ने already थोड़ा cover कर लिया था guidelines, there are some other guidelines also that have to be followed. First thing is that the script writer should realize that script is not written. Actually हम name से literally देखें तो it is script writing, but actually if we delve deep into the aspect, we realize that script is not written but it is evolved. क्योंकि script writing is also an art. Okay, not everyone can write. Only the people who have the understanding or have that taste or sense can write scripts. So script is always evolved. So the script writer should develop such qualities so that he can make it effective. The second one is the script writer should always remember the target audience. In the educational context, the target audience are the students. Okay, so the script should be according to the level of students. It should neither be too difficult or too easy based on the understanding. Then as Sandhya just now shared, it should be direct and simple, and it should neither be too lengthy nor too short, like that, all these things. Then program visuals also Sandhya covered. It should have visuals. We should mention what are the visuals that we are going to show in the video scripting, because video is ultimately a visual, audio-visual medium. Then the commentary should be informal and not book type. Yes, this is very important while writing a script, because we are writing a script which is ultimately going to be presented in the video. So it is not very necessary that the language should be very formal. We can also use that we say, hello everyone, good morning, how are you? Like we ask such words, we use such phrases and words. So it can go like that. Then comes, it should begin with a proper introduction. After the main body of content, it should conclude with a simple summary. We should start what we are going to do today, what we are going to cover. Then while finishing it, while completing it, we have to give a small summary of it so that the students can get a gist or recall what they have learned. Then the last one is very important, as you can see. It should attempt to take its viewers on a journey of discovery rather than simply giving information, because it should not be just seen as for the sake of education or for the sake of study, but it also should be seen as a very interesting or an entertaining thing, because that will make education more interesting. So it should take the viewers to a journey of discovery. Then here comes, now since Sandhya and I were talking about the script in the beginning of the this thing, that we have created a script. So finally now we are going to come to the part how to develop a video script. For that we are going to give you the format. So friends, you all have to remember, we just covered the meaning of script, needs, steps, guidelines, everything is done. Now we come to the actual implementation. एक एग्जांपल लेके अपने व्यूअर्स को बता दें कि वीडियो स्क्रिप्ट हम कैसे बनाते हैं, एक फॉर्मेट बता देते हैं। फॉर्मेट बता देते हैं। देखिए, as you can see here, so as you can see the format of the video script is this. First, it should have the basic entries, the subject that we are going to take, then class, topic, learning objectives, etc. Then as we discussed now, it should have an introduction. It should be greetings हो सकते हैं उसमें, and briefings about what we are going to do. Then comes the main body of content. Here it is scene number. There can be any number of scenes, multiple number of scenes based on the time, depending on the time. So scene number should be written 1, 2, 3, 8, 9, 10. Then title, the subtitle, which part you are covering. That Sandhya will be discussing in the coming slides. Then visuals, which all visuals you are using, you have to write. Like picture of this has been attached, like that. Then host speaking, the person who is going to deliver the content that he is going to deliver should be quoted here, right? Then time duration, like for the first scene, the time duration is from 0 to
1 minute, like that. It should be written, and conclusion should be the summary. What all titles we included, how it is. This is how we write a video script. Now Sandhya, please show your example to students. तो हमारा एग्जाम्पल का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव। इसमें हम स्क्रीन फर्स्ट में लिखेंगे, टाइटल का हमारा टाइटल है प्लास्टिक का बढ़ता प्रभाव। प्लास्टिक का मतलब जैसे कि फिर विजुअल्स क्या देख रहे हैं इस चीज के बारे में कि जगह जगह कचरे के ढेर हैं और जानवर प्लास्टिक को खा देते, पॉलीथीन खा रही हैं गाय वगैरह ये सब। और फिर होस्ट स्पीकिंग इसके लिए क्या कहता है, आज हम प्लास्टिक प्रदूषण के इतने गंभीर खतरे के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत नुकसान कर रहा है। और इसका टाइम ड्यूरेशन 30 सेकेंड, मतलब इस टॉपिक को अगर हम बताते हैं तो उसके लिए 30 सेकेंड तो लग ही जाएंगे। फिर स्कीम नंबर 2, पर्यावरण पर प्रभाव। दूषित नदियाँ, मतलब आपने गंगा नदी के बारे में तो सुना ही होगा, कितना पॉल्यूशन हो रहा है उसमें, जगह जगह पॉलीथीन पड़ी है, बॉटल्स, मतलब पानी पीते हैं लोग बस फेंक देते हैं उसमें। फिर होस्ट स्पीकिंग इसके लिए क्या कहता है, मतलब पर्यावरण को इतना बुरी तरह नुकसान कर रहा है। आप देख रहे हैं कि गंगा नदी में इतना प्लास्टिक की चीजें पड़ी रहती हैं जिसके कारण उसका पानी पीने लायक ही नहीं बच रहा है। टाइम ड्यूरेशन इसके लिए 45 सेकेंड। फिर स्कीम नंबर 3 है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। मतलब जो बारीक पार्टिकल प्लास्टिक के हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं वो उनके लिए हमारे लिए काफी नुकसान कर रहे हैं और मतलब उससे हमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती